22 things that are too real which you can relate if you have Indian parents. On encouragement. White parents versus Desi parents. Hey Swati, just wanted to wish you luck on your SATs. We prayed for you at church. I know you are a smart girl. Don't stress about scores, just be confident. Love you tons. Heart. Indian parents. Remember Naresh, son's uncle got 2400. That's true. It's like if you want a motivational speech for any major exam, parents use this tactic from their arsenals. And most common weapon is शर्मा जी के लड़के को देखो उसके 98% आए थे तुम्हें तो बस PS5 या Xbox दिला दो गेमर बनेंगे नालायक. इंडियन पेरेंट्स. ओके. ऑन एजुकेशन इंडियन पेरेंट्स बी लाइक आर्ट्स वॉज नेवर एन ऑप्शन. बेटा आर्ट्स ली तो मैं सोसाइटी में शर्मा जी के सामने कैसे फ्लेक्स करूँगा. साइंस लेकर इंजीनियर बनेगा मेरा बेटा. आर्ट्स क्या होती है. दिस ट्रूथ. कनु. सिंगल. नो. टेकन. नो. गॉट देसी ब्राउन पेरेंट्स. यस. इफ़ यू हैव देसी पेरेंट्स यू नो वॉट आई मीन. पढ़ाई कर ले जाकर. ऑन डिसएग्रीमेंट. वेन एवर यू डिसएग्री विद योर फादर ही नेवर सेज ओके. वट ही सेज इज चलो जैसा तुमको ठीक लगे, विच इज़ जस्ट अ डिसेंट वर्जन ऑफ बेटा गो फक योर सेल्फ. तुम्हारे दादा के सामने मेरी हिम्मत नहीं होती थी कुछ बोलने की. ये संस्कार है तुम्हारे. ऑन बिलीव्स. देसी पेरेंट्स बिलीव एवरी फॉरवर्डेड वीडियो ऑन व्हाट्सएप बट रिफ्यूज टू बिलीव their kids' depression is real. This is the hard truth. They believe those WhatsApp messages which says good morning, if you don't share this to 5 people you will have a bad day. On mastering the art of texting. Mom, make sure you get checked for electric. OMG, I know, stop reminding me every hour. What is OMG? Oh my god, I have told you this before. Stop yelling and just tell me. Yeah, tell her. OMG means oh my god. OMG, calm down. I know it's their love for reminding us कि हम नल्ले हैं भूल जाएंगे. And improving communication skills. So, my majority of my WhatsApp messages from my mother. How are you? Which takes a small portion of my message of her messages, and the majority of the portion which takes which are her messages are where are you? On accepting gifts. Being Chatterjee. Indian parents don't say thank you when you get them a gift. They say क्या ज़रूरत थी, क्यों पैसे वेस्ट करती है, सेव किया कर. So yesterday I bought my mom a dress online which she always wanted. So her reply was thank you. इतने पैसे क्यों खर्च करता है. हाँ तुम्हारे ही पापा तो अंबानी है ना. On marks. Every time I get a report card my dad would always say B is for bad, C is for you cannot live here anymore. You have to get out. D. Deported. Everyone is leaving. F. Find a new family. I don't know you. दुनिया में कुछ भी कर लेना पर कभी मार्क्स कम मत लाना. अगर आए तो समझ लेना कि अगले एग्ज़ाम तक उनके ताने मिलते रहेंगे और गलती से फ़ोन में गेम खेलते हुए दिख गए तो बाहर टेंट लगाने की तैयारी कर लेना. एंड वेरिंग अबाउट योर सेफ्टी. मी मॉम आई एम गोइंग टू मार्स. मॉम पहुँच के कॉल कर दियो. मम्मी का प्यार है और फ़ोन नहीं किया तो सीधा हाई कमांड से फ़ोन आता है पापा का. फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है. ऑन बीइंग सैवेज. इंडियन पापा घर में बिल्कुल डॉन की तरह रहते हैं. कई बार कुछ अच्छा इंसिडेंट होता है तो भी ताना मार देते हैं यार. विराट कोहली ने सेंचुरी मारी एकदम से मेरे पापा. विराट कोहली तुमसे 3 साल छोटा है, 300 करोड़ कमाता है. अरे भाई एट योर एज मैं 5 बच्चों को अलग अलग ट्यूशन्स पढ़ाता था. ऑन गुड हैबिट्स. अपने बाप से पहले कौन सो के उठता है. मेरा बाप अपने बाप से पहले नहीं उठता. और अगर तुम उठ गए तो आज सूरज कहाँ से निकला है ये तो मिरेकल हो गया. अब उठ ही गए हो तो पढ़ लो. एंड दे लव फॉर टैटूज. इंडियन पेरेंट्स would rather get a tattoo for their utensils but not for their kids. वाओ. प्रेशर कुकर में प्रेस्टीज का टैटू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे. दिस मॉर्निंग रूटीन. देसी पेरेंट्स डोंट वेक यू अप. नो दे डोंट वेक यू अप. दे जस्ट टर्न ऑफ द फैन. दिस इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी विद अ पॉजिटिव मॉर्निंग अफर्मेशन. पंडित जी को बुलाऊं अब क्या मुहूर्त निकालने के लिए. उठ जा.
This regular interrogation. Ma, I'm going out. In US, see you. In France, au revoir. In Spain, adios. In UK, bye. India, out? Where? With whom? Why? Who will drop you? When will you come? Every day you going out? Is this a house or a hotel? How much money will you spend? Oof, no time for parents. Only going out? When I die, then you will know. So true. This other frequent occurrence. When you tell a joke and your parents turn it into speech. On priorities. देखो किस्मत होती है सही मिल जाए बस. I thought my mom is talking about a rishta for me, but she's talking about kamwalis. My mom can't live without her kamwali, her source of daily gossip, what's happening in society. And more priorities. When my mom says, do susu potty before leaving the house. Urinating forcefully. Yeah, that's my face when I urinate forcefully. That's how I pee whenever we go out together in any function. On money saving tactics. Desi parents never actually bought new batteries. Oh no, for their TV remote. They just slapped the shit out of it, hoping it would start working again, and then blame you for watching too much TV. Your fault for watching WWE and football matches all day. In reality, what the TV is playing is news, TV serials, and more serials, barely letting you watch the match. This scary as fuck thing. Scariest thing in the world. Darkness, okay. Clown, okay. Death, okay. When mom hands over the phone to you to talk to a relative. If there is an enemy you need to be most cautious about is your relatives. They won't ask you kaise ho or what are you doing nowadays. They just ask when will you get married? आगे क्या सोचा है? 2024 में कौन जीतेगा? मोदी या राहुल? And list goes on and on. On being pissed. Desi parents getting pissed at grown as employed as children for ordering in food will always be the weirdest and most unnecessary oppression. Mom, beta, you can order whatever you like. Waiter, can I take your order, sir? Mom, yeah, we would like to order. Son, I want. Mom, you shut up. Let the adults order. You waste a lot of food. On being grateful. You cannot be impatient with your parents. If you go like, they are like, we used to clean your potty. Remember that? थोड़ा बड़ा क्या हो गया ये सब करने लगा है भूल गया हमने तेरी पोटी और कच्छे धोए हैं इस दिन के लिए. So guys, like, share and subscribe to this channel for more content like this, and do share your favorite Indian parent incident in the comments below. This is just for fun. I do love and respect my parents, and we all should respect them. They are sacrificing so much thing for us. So until next time, Drofless signing out. हाँ मम्मी आ रहा हूँ.